So we begin today's topic, and the theme is global outsourcing. What is the meaning of outsourcing? जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, काम कराना है और हमारे पास जो डेली वेजेस है, जो हम लोगों को जो डेली वेजेस देते हैं, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो कभी कभी महंगा पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी वी माइट हैव टू गिव द जॉब टू समबडी एल्स, जो यहाँ पे नहीं है, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, किसी और के पास काम करवाना। So let's continue. Let's start with the session here. So I'm going to give you some meanings of the word. After that, you have to connect it with the right definition. Boon. Boon means vardhan. When God gives you something like a blessing, आपको जो आशीर्वाद या वरदान मिलता है, that is a boon. Branch. Branch is what? डाड़की. कोई झाड़नी जो डाड़की हो, that is a branch. Catch up. Catch up means जो छूट गया है वो वापस कवर करना, that is called catch up. आप पढ़ाई में आपकी छुट्टी के बाद वापस catch up करते हो तो that is catch up. You can also use catch up in different ways. कि जैसे आप बहुत सालों बाद दोस्तों को मिलते हो तो क्या बोलते हैं catch up. To be caught up after 10 years. मैं आपको शाम को मिलता हूँ, catch up in the evening. Next is coincide. Coincide यानी संजोग बनना. जब दो चीजें साथ में होती है, that is called coincide. जैसे आप किसी की बात कर रहे हैं और वो इंसान वहीं पे वो जगह पे आ जाता है, ये दोनों चीज क्या हुए? कोइंसाइड. इसमें से बनता है वर्ड कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस मींस संजोग. कन्फ्रंट. कन्फ्रंट यानी किसी के साथ कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक पे बातचीत करना, दैट इज कन्फ्रंट, यानी सामना करना. कभी कभी झगड़ा होता है क्योंकि हम कन्फ्रंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका नेबर ठीक से गाड़ी पार्क नहीं कर रहा है, आप उसको पूछते हो यार पार्क क्यों नहीं करता है प्रॉपर्ली. यू आर कन्फ्रंटिंग हिम. व्हाट यू आर डूइंग? कन्फ्रंटिंग. नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी मींस विवाद. कोई चीज आप बोलते हो या कुछ ऐसा करते हो जिससे लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, दैट इज अ कंट्रोवर्सी. डिसाइसिव. डिसाइसिव એટલે જે નક્કી કરે એવું, जो चीज डिसाइड करती है उसको बोलते हैं डिसाइसिव. जैसे इंडियन आइडल में जो सेमीफाइनल राउंड होता है वो डिसाइड करता है. इट्स कॉल्ड अ डिसाइसिव राउंड. व्हाट काइंड ऑफ राउंड? डिसाइसिव राउंड. डिसाइसिव मोमेंट यानी ऐसा मोमेंट जब आपको डिसीजन लेना है, दैट्स कॉल्ड अ डिसाइसिव मोमेंट. नेक्स्ट इज एंटाइसिंग. एंटाइसिंग मींस जो चीज आपको ललचाती है, दैट इज कॉल्ड एंटाइसिंग. नेक्स्ट इज एपिसेंटर. एपिसेंटर क्या होता है? जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक आता है या फिर आग लगती है, तो जो जगह पे वो सेंटर, जो जगह होता है जहां से वो भूकंप चालू हुआ, दुर्घटना जहां से वो स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम एपिसेंटर. एपिसेंटर इज द मेन पॉइंट. फर्म. फर्म के दो मीनिंग है. फर्म यानी कंपनी. एक तो कोई कंपनी चलाता है तो दैट इज अ फर्म. फर्म का दूसरा मीनिंग है जब आप कोई डिसीजन पे अटल रहते हैं, मक्कम रहते हैं, दैट इज ऑल्सो फर्म. आई एम वेरी फर्म अबाउट माई डिसीजन. शी वॉज वेरी फर्म. फर्म मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड श्योर अबाउट इट, दैट्स कॉल्ड फर्म. नेक्स्ट इज लूमिंग. लूमिंग का क्या मीनिंग है? जो आपके सामने मंडरा रहा है, जैसे खतरा मंडरा रहा है, दैट इज लूमिंग. राइट. कम इनटू व्यू इंडिस्टिंक्टली, ऑफन थ्रेटनिंग. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे सामने एक खतरा मंडरा रहा है, ऊपर मंडरा रहा है, सर पे मंडरा रहा है, दैट इज लूमिंग. जैसे यार आज तो बारिश होने वाली है. हाउ डू यू नो? द डार्क क्लाउड्स आर लूमिंग. डार्क क्लाउड्स आर लूमिंग. आगे का समय बहुत खराब आने वाला है, तो आप बोल सकते हैं आगे खतरा मंडरा रहा है. डार्क डेज आर लूमिंग अहेड. डार्क डेज आर लूमिंग अहेड, दैट इज लूमिंग. ओपोनेंट. ओपोनेंट इज जिसके साथ आपका मुकाबला होता है, दैट इज योर ओपोनेंट. पॉइंट. पॉइंट का सबसे कोई भी चीज का आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है, दैट्स अ पॉइंट. कोई बात का पॉइंट होता है. किसी के सामने उंगली करना इज ऑल्सो पॉइंट.
right? That is point. Next. Now this is interesting. Preponderant. What is it? Preponderant. तो पहला मीनिंग है ponder. Ponder का मीनिंग है चिंतन करना, कोई चीज पे आप सोचते हो, दैट इज कॉल्ड ponder. लेकिन preponderant का मीनिंग क्या है? जो दूसरों से ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, दैट इज preponderance. What is it? Superior. दूसरों से अच्छा है, दैट इज preponderance. And then we have proponent. तो एक वर्ड होता है IELTS में opponent. Opponent यानी जो टॉपिक के विरोधी होता है, that is called opponent. तो ये टॉपिक के विरोधी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये चीज बुरी है, opponent say that. लेकिन जो उसका सपोर्ट में है, that is called a proponent. Opponent and proponent. कि ये टॉपिक के जो सपोर्टर्स है वो मानते हैं कि the proponents of the top. रिमाइंडर, बचा हुआ जो है, जो बाकी है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अ रिमाइंडर. रूटीनली, जो हम रेगुलरली करते हैं, दैट इज रूटीनली. शिफ्ट. शिफ्ट यानी दो मीनिंग. एक तो कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं शिफ्ट. दूसरा शिफ्ट का मीनिंग है एक बदलाव आ जाता. कोविड के बाद हमारे पढ़ाई में, हमारे रूटीन में एक बड़ा सा बदलाव आया. देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन एजुकेशन. Shift is equal to change. 19th is turnover. Turnover यानी आपके पास जो भी माल सामान है जो बिक जाता है, पूरा नया माल आता है, that is a turnover. Turnover यानी माल आके माल की हैंडलिंग बदलती है. And last is wealthy. Wealthy means धनवान, अमीर. And now I'm taking it into full screen mode. Now you guys will be connecting it with the right word, right meaning. Right, so let's start with the first word. You guys tell me what is the meaning of the first one. Boon. So sir, boon એટલે વરદાન હતું ને. So that is a benefit or advantage. So boon. Branch. Branch is local office of a larger company. कोई भी कंपनी की ब्रांच यहाँ पे है. ब्रांच इज व्हाट? लोकल ऑफिस, जो आपको नजदीक में मिल जाए. नेक्स्ट इज कैचअप. कैचअप यानी टू रीच समवन और समथिंग दैट इज अहेड. कोई आगे चीज है तो उसको कवर अप करना, क्या बोलते हैं हम? कैचअप. कि हम बाद में कैचअप करेंगे. कोइंसाइड. जी करेक्ट. टू हैपन एट द सेम टाइम, दैट इज कोइंसाइड. कि उसकी मूवी, एक मूवी है, मूवी में एक विलन मर रहा है और वो मरने के टाइम पे कोई पैदा हो रहा है. यू कैन से हिज बर्थ एंड द विलन्स डेथ coincided, means they happened at the same time. My arrival at the mall, मेरा मॉल पे आना हुआ, and her departure, उसका वहां से निकलना, that was at the same time. It coincided. यानी हमारी किसी के साथ सेम टाइम पे मीटिंग हो गई, तो that it coincide. Next is confront. Confront is very nice. To face a difficulty, that is you confront a difficulty. Next is controversy. A controversy is a lot of disagreement affecting many people. कि बहुत बड़ी controversy हो गई, लोग गुस्सा हो गए, that's a controversy. Next is decisive. That is important, affecting a decision. It affects a decision. That is a decisive moment. कि यार वो मेरे जीवन का बहुत decisive हिस्सा था. Decisive means deciding moment. Next one, enticing. ललचाता हुआ. Attractive. Yes, enticing is attractive. Right? Epicenter is B. Central or most important place, that is called the epicenter. Firm is Q. A company, business, organization, that's Q. Looming, मंडरा रहा है, that is P. Nearing, जो नजदीक आ रहा है, usually said of a threat or difficulty, that is called looming. Next one, opponent. पहले हमने क्या था? विरोधी, कोई चीज का विरोधी.
कंपटीशन में होता है ओपोनेंट, सो दैट इज समवन हु डिसएग्रीज एंड स्पीक्स आउट, आपके विरोध में बोलता है, दैट इज एन ओपोनेंट. पॉइंट इज टू कॉल अटेंशन, टू लोगों का ध्यान खींचना, दिस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट आउट. या नेक्स्ट इज प्रीपोंडरेंस. प्रीपोंडरेंस इज एस, द लार्जेस्ट अमाउंट, मीनिंग क्या है उसका, द लार्जेस्ट अमाउंट, दैट इज द प्रीपोंडरेंस, सबसे ज्यादा. एंड प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट यानी क्या हुआ, सपोर्टर, करेक्ट. रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं बचा कुचा, जो भी बचा कुचा है, दैट इज द रिमाइंडर, दैट इज द रेस्ट, व्हाट इज लेफ्ट. जनरली आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा जितना खाना है खा ले, जो बचा होगा मैं खा लूं. योर मदर सेज आई विल ईट द रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी जो बाकी रखा है. बट शी नॉट से कि मेरे लिए इतना रखना, शी विल बी लाइक, मॉम इज ऑलवेज लाइक के जितना तुझे खाना है खा ले, जो भी रहेगा कम तो कम, आई विल ईट दैट, दैट इज अ रिमाइंडर. रूटीनली, on a regular basis. Shift, H. A period of work time. अच्छा, that is also a shift. यार मेरी shift है आज, कल shift है. Turnover. Turnover is L. The rate at which employees leave and are replaced. जैसे माल सामान का turnover होता है, वैसे companies में employee का भी turnover होता है. Turnover is like, there's a word for it. Attrition. कंपनीज में होता है attrition. Attrition rate अगर बहुत हाई है, मींस लोग छोड़ के जा रहे हैं और उसको नए लोगों के साथ हमें रिप्लेस करना पड़ता है. That is attrition. And last is wealthy. Wealthy यानी धनवान. That is rich. Correct. Right. So now you guys have seen all the meanings. You're clear with all the meanings. Now we are going to read a passage on global outsourcing. Right. So let's start by reading it. Okay, Muskan, can you start reading the first para? Yes, sir. Global outsourcing. Outsourcing, subcontracting work to another company has always been a part of doing business. Firms hire other firms to do work they cannot themselves or can have done more cheaply elsewhere. With today's global economy, the practice is now so prevalent that even companies in the business of outsourcing or are outsourcing work to others. Should I continue? Yes, yes. Wealthy nations routinely send all types of work to countries where labor costs are cheaper, but currently the most frequently outsourced jobs are in information technology, IT, software, and customer service. Japan, Western European countries, and the United States outsource the most work, and India and China take in the most. So outsourcing का मीनिंग क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क टू अनदर कंपनी. मीनिंग सिंपल मीनिंग है कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, हम करने की जगह किसी और के पास काम करा है, जैसे जॉब वर्क करा है, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग. जैसे मैं समोसा बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे चटनी बनाने का कंटाला, तो किसी के पास मैं चटनी बना रहा हूँ और मैं मेरे समोसा के साथ उसको सेल कर. दिस इज आउटसोर्सिंग द चटनी. वेरी बेसिक, राइट. सो इट हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस करने का हमेशा एक हिस्सा रहा है. फर्म्स हायर अदर फर्म्स टू डू वर्क दे कैन नॉट डू देमसेल्फ. जो खुद काम नहीं कर सकते वो किसी और के पास करवाते हैं, और कैन हैव डन मोर चीपली एल्सवेयर. जहां सस्ते से काम मिलता है तो करवा लेते हैं. विद टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी, आज की दुनिया में जब सब कुछ कनेक्टेड है, the practice is now so prevalent. We learned this word yesterday, prevalent. जो चीज चलन में है, तो ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस यानी ये जो प्रथा है, वो इतनी चलन में है that even companies in business of outsourcing are outsourcing work to others. यानी जो कंपनी है जिनका धंधा है बिजनेस ऑफ आउटसोर्सिंग, कि वो आउटसोर्सिंग ही करते हैं, वो भी उनका काम किसी और के पास करवाते हैं. Right? So did you understand this sentence? That even companies in the business of outsourcing, यानी outsourcing का मीनिंग क्या है, जैसे मैं किसी के पास जॉब वर्क कराता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा जॉब वर्क कौन करेगा, तो एक कंपनी मुझे सप्लाई कर रही है कि ये लोग आपके लिए ये काम करेंगे.
और वो काम भी वो किसी और के पास कर रहा है। वेल्दी नेशंस यानी जो रिच कंट्रीज है रूटीनली यानी रेगुलरली send all types of work to countries where labor costs are cheaper. हमने देखा है कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश यहाँ पे सब काम आ जाता है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इवन इन पाकिस्तान जैसे आईटी जॉब्स है, तो ये सारी कंट्रीज में उनको लेबर सस्ता पड़ता है. But currently the most frequently outsourced jobs are in information technology, that is IT sector, software and customer service. So Japan, Western European countries and United States, ये लोग खुद काम नहीं करते, they outsource the most work, and India and China take in the सबसे ज्यादा काम कौन करता है? ये लोग. इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, बिकॉज हम लोग बहुत सारा काम मिल रहा है. काम मिल रहा है मीन्स लोगों को पैसा मिल रहा है. Alright, now we continue with it. Alright, okay. Maria, can you read the next paragraph? Yes, sir. Language skills are decisive factor in where work is sent, with India and the Philippines serving English-speaking clients. Argentina working with Spain, Mexico serving Spanish speakers in the United States, and China handling Asian languages such as Mandarin, Cantonese, and Korean. As per preponderance of corporation conduct business in English, the bulk of outsourcing job in recent decades have gone to India, where its status as farmer birth colony resulted in millions of people speaking English as their first language. About half of India's outsourcing work comes from the United States, with about a quarter from European countries and the remainder from countries such as Japan and Australia. So language skills are a decisive factor. अगर आपके लोगों में लैंग्वेज है तो ही उनको आउटसोर्सिंग मिलेगा, वरना बाहर के लोग आपके पास काम क्यों करवाएंगे, राइट? सो इट इज अ डिसाइसिव फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन वेयर वर्क इज सेंट, काम कहाँ भेजा जाता है. विथ इंडिया एंड फिलीपींस सर्विंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स. इंडिया वाले लोग कौन किसको सर्व करते हैं? जो क्लाइंट्स इंग्लिश बोलते हैं उनको. अर्जेंटीना वर्किंग विथ स्पेन, अर्जेंटीना किसके लिए काम करता है? स्पेन. Mexico serving Spanish speakers in the United States, and China handling Asian language such as Mandarin, Cantonese, and Korean. As a preponderance of corporations, यानी सबसे ज्यादा कंपनी जो है कंडक्ट बिजनेस इन इंग्लिश, सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज में बिजनेस होता है? इंग्लिश में. The bulk of outsourcing jobs in recent decades, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा जो आउटसोर्सिंग जॉब्स होते हैं have gone to India, where its status as a former British colony, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज लोग राज करके गए, resulted in millions of people speaking English as their first language. उनकी पहली भाषा या मातृभाषा इंग्लिश हो गई. तो इंडिया में आपको बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लोग आराम से मिलेंगे. And about half of India's outsourcing work comes from United States. ज्यादा काम कहाँ से आता है? यूएस से, with about a quarter, that's 25% from European countries, and the remainder, बाकी का जो है, comes from countries such as Japan and Australia. So very basic understanding, you all should know what is outsourcing calculation. तो जैसे मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है और वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट यूएस में, मुझे अगर मैं कोई कंपनी को दे रहा हूँ कि भाई मुझे तू सॉफ्टवेयर बना के दे, तो वो यूएस का कॉस्ट मुझे पड़ेगा $4,000. What is it? तो यहाँ पे मुझे अमेरिका की एक दूसरी कंपनी है, वो दूसरी कंपनी क्या करती है, बहुत अच्छे से मुझे देती है कि भाई आपका सेम सॉफ्टवेयर हम आपको $2,000 में बना के देंगे. तो आप कौन से के पास जाओगे? 2000, राइट? तो 2000 वाला क्या करता है, वो जो जॉब है वो इंडिया की कंपनी को देता है. इंडिया की कंपनी को वो जॉब कितने में मिलता है पता है? इंडिया की कंपनी को वो जॉब मिलता है कितना? तो वो खुद ने रख लिया और 1000 में इंडिया को दे दिया.
इंडिया में जो कंपनीज को करती है काम, वो कंपनी खुद के पास 500 रखती है और एम्प्लॉयज को देती है 500. दिस इज लाइक द फैक्ट, राइट? हाउ मच? 500 या फिर उससे कम. जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं यूएसडी में, सो नाउ ओके 500 USD into INR, तो करंट रेट इसका है 40,000 रुपीज. कितना हुआ? Where is the yeah, so it's 40,000 rupees. So कितना हुआ? उन्होंने कितना खर्चा किया कंपनी ने, बाहर वाले ने? 4,000 की जगह उन्होंने कितना दिया? 2,000. तो फायदा हुआ उनको, फायदा सबको हुआ. और इंडियन सैलरी को, इंडियन आदमी को सैलरी कितनी मिल रही है? 40,000 इंडियन रुपीज. उसको इंडिया में ये जॉब मिल रहा है बेसिक सैलरी, बिकॉज वहां पे उनको देना है $500. तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. सबका भला होता है, लेकिन नुकसान किसी एक का होता है. किसका? जो वो कंट्री में लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके जॉब्स जो है वो इंडिया वालों को, राइट? सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. समझ पड़ी ना? बता ना आ रीते रियल वर्ल्ड में चाले. दिस इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन. ऑलराइट, so let's continue. Ria, can you read the next one? Ria is gone. Okay, Joy is also gone. Who is this iPhone? Can you read it? Who is the student iPhone? Can you read this? Okay, so Shifa, can you read the next one? Yes, sir. Some of the largest outsourcing firms in the world have headquarters in India. However, confronted with increasing demand, a looming shortage of skilled workers, and rising wages at home as the Indian economy grows, some of those outsourcing companies are now turning to other countries to help meet their own staffing needs. They outsource largely to China, but also to dozens of other countries, including the Philippines, Mexico. So some of the largest outsourcing firms in the world have headquarters in India. उनके headquarters इंडिया में है. However, confronted with increasing demand, क्योंकि उनको एक चीज का सामना करना पड़ रहा है. क्या है? डिमांड बढ़ रही है. A looming shortage of skilled workers, यानी एक खतरा मंडरा रहा है. क्या है? It is a shortage of skilled workers. उनकी कमी है. Rising wages at home as the Indian economy grows. तो इंडिया में भी महंगाई बढ़ी रही है. Some of those outsourcing companies are now turning to other countries to help meet their own staffing demands. तो countries क्या कर रही है? और countries दूसरे countries के पास जा रहे हैं. They outsource largely to China, but also to dozens of other countries, including the Philippines, Mexico, Brazil, Saudi Arabia, and in some cases the country where the work originated. तो वो इधर उधर भी दे रहे हैं. For example, a US-based company might outsource IT plans, IT support to a company based in India. India में देती है, which then subcontracts part of the work to a company in the United States. तो वापस किसी को US में काम सौंप रहे हैं. Much of the IT support market is now moving to China, where a vast supply of highly trained people are willing to work for lower wages. एकदम कम सैलरी में लोग काम करने के लिए तैयार है than people in India. With newer Chinese companies not yet well established in the outsourcing market, नई कंपनीज है और वो अभी तक सेट नहीं हुई है. इंडियन फर्म्स आर ओपनिंग ब्रांचेस देयर. तो इंडियन ब्रांचेस वहां पे है where their knowledge of English, क्योंकि उनके पास, इंडियन लोगों के पास इंग्लिश बेहतर है चाइनीज लोगों से, and well developed managerial skills, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, give them an advantage. तो वहां पे उनका एक फायदा है, at least for now, in dealing with international clients. तो इंडियन लोगों के पास ये बेनिफिट है कि वो क्लाइंट कम्युनिकेशन में बेहतर है. Okay, so outsourcing has become a source of controversy
एक विवाद का एक इश्यू बन गया है, लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करते हैं, फाइट करते हैं विद ओपोनेंट्स, यानी ओपोनेंट्स इसके जो विरोधी है बोलते हैं, पॉइंटिंग यानी ये बताते हैं टू द लॉस ऑफ जॉब्स एंड डैमेज टू द इकोनॉमी इन द होम कंट्री, कि भाई आप यहाँ से किसी और को जॉब करवा रहे हो तो यहाँ पे लोगों का लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है। एंड प्रोपोनेंट्स, सपोर्टर्स जो है, व्यूइंग द सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट, और अपने अब जो यहाँ पे इस पॉलिसी के जो सपोर्टर्स है वो बोल रहे हैं कि लेबर में आपका बचत कितना हो रहा है, एज अ बूम टू बिजनेस, इट्स अ बूम टू बिजनेस, यानी यार बिजनेस को ये वरदान है कि वो काम कर सकते हैं लेकिन उनको इतना महंगा नहीं पड़ रहा है, यानी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। द रिसीविंग कंट्रीज, यहाँ जहाँ पे उनको ये मिल रहा है वर्क, जनरली कंसिडर द वेल पेइंग जॉब्स अ बेनिफिट टू देयर इकोनॉमी, उनको तो फायदा ही है, बट एम्प्लॉयज आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद द वर्क, लेकिन काम करने वाले लोग खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज स्टाफ टर्नओवर कैन बी हाई, कंपनीज में, आईटी कंपनीज में देखो तो लोग जॉब में जंप कर रहे हैं, कोई यहाँ से वहां से यहाँ आ रहा है, कैन बी वेरी हाई। When employees have to work long night shifts, उनको नाइट शिफ्ट्स में बहुत काम करना पड़ रहा है to coincide with the business day in the outsourcing country, सामने वाली कंट्री का बिजनेस डे सुबह में चालू होता है, तो उसको मैच करने के लिए हमेशा इन लोगों को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। तो आईटी वालों में ऐसा ही बोला जाता है कि भाई पैसा बहुत है, लाइफ नहीं। इंडिया रिमेन्स द आउटसोर्सिंग एपिसेंटर फॉर नाउ, यानी आउटसोर्सिंग का हब जो है वो इंडिया ही है, with China slowly catching up, और धीरे धीरे चाइना कैचअप कर रहा है, यानी नजदीक आ रहा है, but the situation will continue to change. Once wages rise high in India, enough in India and China, जब यहाँ की सैलरी बढ़ जाएगी लोगों की और हमारी डिमांड ज्यादा होगी सैलरी के लिए, तो foreigner workers somewhere else will be as enticing to outsourcing countries as India and China now are to Europe, Japan and the United States. तो आज जितना अट्रैक्टिव उनको हम लगते हैं, शायद कोई हमें हमारे से कम दाम में अगर उनको मजदूरी देगा तो वो लोग उनके पास चले जाएंगे। So global outsourcing, fill in the blanks, complete the summary using words from the list. तो हमारे पास words है boon, branch, catch up, confront, enticing, epicenter, firm, looming, remainder, turnover and wealthy. 7 words, fill in the blanks. आउटसोर्सिंग इज वेरी कॉमन इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी, आज के जमाने में बहुत कॉमन हो गया है। A preponderance of companies in dash nations send work to countries where wages are low. कौन से नेशन की कंट्रियां काम देती है? Come on, wealthy, correct. Which countries, right? The answer is wealthy. These countries are dash to large companies because labor costs are cheap. ये लार्ज कंपनी को ये कंट्रीज कैसी पड़ती है, कैसी लगती है? वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ये कंट्री की तरफ, एंटाइसिंग, ललचा जाते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? These countries are enticing, enticing यानी एक there is a bike जिसका नाम है एंटाइसर, एंटाइसर, बजाज एंटाइसर समथिंग, सो एंटाइस मींस ललचाना। तो ये कंपनीज लोगों को ललचाती है क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट सस्ता है, बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय, इंग्लिश वही लैंग्वेज है ज्यादातर नंबर ऑफ international corporations, a large percentage of outsourcing work has gone to India and the dash has been sent to other countries. और दूसरा क्या, बाकी का जो काम है वो दूसरों को मिला है। The dash remainder बाकी का जो बचा हुआ बोला ना, that is the remainder has been sent to other countries. Now wages are rising in India. India में भी wages बढ़ रहे हैं and more outsourcing work is being sent to other countries. दूसरों को मिल रहा है। Proponents of outsourcing point out, जो इसके supporters है वो ये point out करते हैं that as well as being beneficial to the outsourcing companies. आउटसोर्सिंग कंपनीज को तो फायदा दे ही रहे हैं।
as well as being beneficial to the outsourcing companies, it is also a major dash to the economies of receiving countries. उनके लिए भी बहुत बड़ा वरदान, boon. It's a major boon to the economies of receiving countries. Outsourcing companies dash some disadvantage, however. क्या होता है? उनको भी सामना करना पड़ता है. So they have to confront. They have to confront some disadvantages. However, for example, there is sometimes a high dash of employees who aren't always happy with nighttime work schedules. क्या होता है उनका? Turnover. Turnover, a high turnover. और उसको यहाँ पे कॉर्पोरेट में बोला जाता है एट्रिशन रेट. क्या बोलते हैं उसको? एट्रिशन रेट. Another word for turnover. Labor costs are rising in India and China. दाम बढ़ रहे हैं मजदूरी के. When costs in this country start to dash with costs in wealthier countries. जब रिच कंट्रीज के साथ हमारी मजदूरी का दाम भी उतने जैसा मैच हो जाएगा, companies will start sending their work to other places. Start catch up. Correct. हमारा जो काम है वहाँ हमारी जो सैलरी होगी वो अगर उतनी ही मांगेंगे जहाँ जितनी वहां पे मांग रहे हैं, जो $500 है उसकी जगह हम भी जब $2000 मांगना चालू करेंगे, तब जाके ये लोग किसी और को पकड़ेंगे. Are you clear with this passage? Right? We learned some nice words. So let's see some parts of speech. तो पहला word है noun controversy. Controversy is विवाद. There has been a good deal of controversy around the issue of outsourcing labor. इसके ऊपर बहुत controversy हुई है. जो controversy करता है उसको बोलते हैं controversial. जैसे राखी सावंत कुछ भी बोलती है टीवी में, तो वो controversial बातें बोलती है, right? So that's an adjective. Outsourcing labor is a controversial issue. Adverb है controversially. Many major firms are controversially sending more work to countries where labor is cheap. बहुत सारी कंपनीज जो है वो विवाद के बावजूद अपना जो काम है वो इन लोगों को भेज रही है. Next is noun decision. Decision means निर्णय. Many large firms have made the decision to outsource labor to other countries. उन्होंने ये निर्णय लिया है. Decision. Decision से बनता है verb decide, यानी तय करना. Some firms decide not to outsource labor to other countries and hire local workers instead. कुछ कंपनियां लोकली लोगों को जॉब देना पसंद करती हैं. Adjective है decisive. Decisive means जे नक्की करे तेवु. એને શું કહેવાય? Decisive. The cost of labor is a decisive factor for outsourcing work. बाहर काम देने का एक मेन कारण यही है. क्या है? Cost of labor. Decisively, यानी जो निर्णय लेता है वैसे, that is adverb. The company responded decisively by sending the work overseas. उन्होंने काम overseas भेजा और कंपनी ने decisively respond किया. Next is enticement, यानी लालच. Low wages are often an enticement for companies looking to cut cost. उनके लिए एक बहुत बड़ा लालच है low wages, क्योंकि अगर एम्प्लॉय लो वेजेस मांग रहा है तो उसी को सिलेक्ट करेंगे. ललचाना is a verb that is called entice. Low labor costs entice outsourcing companies to open branches in certain parts of the world. Adjective है enticing, जो ललचाता है वैसा. Outsourcing companies find low labor costs enticing. लोगों को बहुत ललचा देती है. That is enticing. Next हमारा word है opponent. Opponent क्या है? It's a noun. विरोधी. Opponents of the practice of outsourcing, इसके जो विरोधी है outsourcing labor, say that it is bad for the economy of the home country. इस country की growth के लिए बुरा है. Noun है opposition, यानी विरोध. There has been a certain amount of विरोध to the practice of outsourcing labor. Outsourcing की वजह से थोड़ा बहुत विरोध हुआ है. Verb है उसका oppose. Many people who have lost their jobs oppose outsourcing labor to other countries. इसकी नौकरी गई है वो इसका विरोध करते हैं. Adjective is opposing, यानी विरोध करने वाला.
People hold opposing views on the issue of outsourcing. जो outsourcing का मुद्दा है उसके ऊपर लोगों के opposing views है. Opposing views means एक दूसरे के विरोध करे वैसे. Last two. Noun છે preponderance, સૌથી વધારે. શું કહેવાય એને? Preponderance. જેમ કે ઇન્ડિયામાં સૌથી વધારે IT jobs છે. There is a preponderance. So a preponderance of outsourcing work comes from the United States, Europe, and Japan. The adjective is preponderant. Jobs from international companies play a preponderant role in the economies of a number of countries. An adverb is preponderantly, right? So the work shifts at these companies are preponderantly long. Work shifts Last one is a noun, routine. The job is not difficult as all employees follow the same routine. Adjective is also routine. The work is routine and not very interesting. An adverb is routinely. Employees routinely work night shift. Routinely એટલે regular. તો હવે આપણે જે વર્ડ્સ જોયા એ પ્રમાણે you have to put them in the right place. All right, so let's select the right word. You have to select the correct part of speech here. So many customer service companies outsource their work to other countries. The dash to do this is generally based on labor costs. The Decide. How is it decided? The decision to do this. The decision. ये करने का निर्णय किसके ऊपर आधारित है? Is based on labor cost. Right? Because wages are lower in certain parts of the world. There are many people who dash this practice. આનો વિરોધ કરે છે. શું આવશે? Opponent, opposition or oppose? Oppose. There are many people who oppose this practice because it leads to loss of employment. लोगों की नौकरियां जाती है for workers in the company's home country. वो कंपनी के खुद के ही देश में लोगों का लॉस होता है. This is one reason, ये एक कारण है why the outsourcing labor has become dash. It's become controversial, right? For the receiving countries, on the other hand, यहाँ पे उल्टी साइड पे जिसको ये मिल रहा है काम, global outsourcing offers economic opportunity. पैसे कमाने का एक जरिया मिल रहा है. Inconvenient night shifts are dash in customer service jobs. सबसे ज्यादा क्या है? Inconvenient night shifts. So they are 12 inconvenient night shifts are routinely. So two words are correct here. They are preponderant or they are preponderantly in customer service jobs, and the work can be boring and dash. Boring and कैसा होता है? Boring and routine. Boring and routine. But the dash is regular employment. But लालच क्या है? Regular employment at a relatively decent wage. अच्छी salary मिल रही. लालच क्या है? Enticement. Clear with the words, everyone? Very nice. All right, so जो words दिए हमने अभी, as I said, different meanings. Many words have more than one meaning. The form का एक meaning है as a noun, a company, business or organization, or as an adjective it means hard, steady and unchanging. Okay, मक्कम, आपको आपके decisions पे मक्कम रहना पड़ेगा. So tell me, which one is it, A or B? The price of our products are firm and we are not willing to change them. Is it meaning A or meaning B? B. B, correct. The director of the firm are thinking about outsourcing some of the work to another company. That is
A. Right? One more here, shift. तो shift का क्या मीनिंग है? Period of work time. आपका night shift या day shift है. दूसरा मीनिंग है to move and to change. जो मैंने बताया कि कहीं से move करना is also shift. और बड़ा बदलाव आता है. That is also a shift. So answer. They decided to shift some of the work to another branch of a company. So A or B? B. Correct. B. Decided to move or change. The shifts at this company are generally 8 hours long. इस company के shifts 8 घंटे के हैं. Answer is A. Period of work time. All right, so get ready for the last part for today. It's a listening test. Listen to a talk and complete the timeline below. तो यहाँ पे timeline है और timeline में questions है from 1 to 5. तो first answer is a year. कोई साल का नाम होगा obviously. The firm built the first factory. ये कंपनी ने पहली फैक्ट्री बनाई. 1910 में owners decided to have a dash. Owners ने क्या बनाना तय किया. थर्ड में वापस I think year ही आना चाहिए. First branch factory built. उनकी first branch बनी. 1940 में ओरिजिनल फैक्ट्री को रिप्लेस किया गया. 1998 में the most dash year of the company. No outsourcing of labor. तो वो साल उनके लिए कैसा था? And present आज के जमाने में Apex is a major employer in the region. सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देती है with low dash. सबसे कम क्या है इस कंपनी में? So listen to the audio and answer the questions. Unit 7, Business, Global Outsourcing. Listen to a tour guide at a factory. Welcome to the Apex Factory Tour. Let's begin with a little history of the factory. The Apex manufacturing firm has been in existence since 1900, when the company built the first factory right here on this site. It was quite a boon to the local economy since it was the first factory in this region. In fact, Apex was at the epicenter of manufacturing in this region for many, many years. Business was so good that in 1910 the firm's owners decided to add a night shift in order to keep the factory operating 24 hours a day. As you can imagine, the firm's owners became quite wealthy. The first branch factory was built in 1915. In 1940, the original old factory was completely torn down and replaced with a new, larger one on the same site. That's the building we're standing in now. Over the years, there have been a number of changes, of course. Then came 1998, which was perhaps the most decisive year for the company. The decision had to be made about outsourcing some of the labor, as many other companies were doing and are doing. The firm's owners ultimately decided not to do so. That decision means that at the present time, Apex remains a major employer in this region. There's a high level of satisfaction among our staff, as shown by the fact that our employee turnover is quite low. So no more than 2 words are possible. So what is the first answer? What year? 1900. Correct. The year is 1900. The owners decided to have a dash. They decided to have a Night shift. So that they became very rich. उनके पैसे बढ़ गए, कमाना चालू कर दिया. कौन से ईयर में फर्स्ट ब्रांच बनाई उन्होंने? 1915. Correct. And the most dash year उनके सबसे Decisive. decisive यानी जो तय करता है year, जब उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बाहर से लोगों को आउटसोर्सिंग नहीं कराएंगे. And low employment. So low employment turnover. Right? Okay, great. So that was the listening part of this lesson. We learned some nice words related to outsourcing. Okay, here is a writing question. There has been some controversy about the practice of companies in wealthy countries outsourcing labors to countries where wages are lower. What do you feel are the advantages and disadvantages of this practice? So we already saw फायदा क्या है, नुकसान क्या है. फायदा जिसको जॉब मिल रहा है उसको है, नुकसान उसको है, खुद की कंट्री को है कि हमारे लोगों को जॉब देने की जगह हम बाहर वालों को दें. Look at the topic, talk about the following topics. Tell about a decisive moment in your life. That's an important moment. What are some difficulties you confront in your daily life as a professional or a student? कौन सी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है? So that is the end of this lesson.